चलो गाइस, तो आज मैं फिर से ले आया हूँ आपके लिए बेहतरीन आरसी का क्वेश्चन। तो ये थोड़ा सा लंबा है, लेंदी है थोड़ा सा, तो फटाफट रेडी होते हैं और इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो कह रहा है कि एलोरा, अ वुमन ऑफ preternatural intellect and an alchemist of considerable renown, resided in a secluded tower perched precariously upon the jagged peaks of the Athelian mountains. Life was a tapestry woven with threads of esoteric knowledge, arcane symbols, and the perpetual pursuit of transmutation, the mythical conversion of base metals into gold. Yet her true obsession lay not in mere material wealth, but in the elusive philosopher's stone, a legendary substance purported to grant not only alchemical perfection but also immortality. Years had elapsed in arduous experimentation से एक्सपेरिमेंट कर रही थी, काफ़ी साल बीत गए एक्सपेरिमेंटेशन में. Her laboratory a chaotic symphony of bubbling retorts, splattering furnaces, and the acrid tang of the volatile compounds. Her once vibrant countenance was now edged with lines of fatigue and the pallor of prolonged indoor confinement. Sleep had become a fleeting luxury sacrificed at the altar of relentless inquiry. Despite the quixotic nature of her quest, Laura remained underrated. Her resolve an indomitable force against the skepticism of the mundane world and the countless failed attempts that littered her path like shattered dreams. One tempestuous evening, as lightning lacerated the inky sky and the thunder reverberated through the ancient stone of her tower, Ilara achieved a breakthrough. A shimmering opalescent substance coalesced in her crucible, radiating a faint ethereal glow. It was not the fabled crimson of the stone, but something entirely novel, something that hummed with an unfamiliar energy. Cautiously, she subjected it to a battery of tests, her hands trembling with a mixture of trepidation and exhilaration. The results were stupefying. The substance possessed properties that defied conventional alchemical understanding. It accelerated molecular rearrangement with unprecedented efficiency and exhibited a peculiar affinity for biological matter. आगे बढ़ते हैं. A chilling realization dawned upon her. This was not merely a precursor to the philosopher's stone, it was something far more profound, potentially far more perilous. Its interaction with organic materials suggested a capacity of rapid cellular regeneration, power that bordered on the divine. The implications were staggering. Immortality, once a distant theoretical goal, now seemed within grasp, but the path to such a power was fraught with ethical conundrums and unknown consequences. For days, Elora wrestled with her discovery. The lure of eternal life was a powerful siren song, promising endless time for study, for perfecting her craft, for witnessing the unfolding millennia. Yet a deep-seated apprehension gnawed at her. What were the unforeseen side effects of such radical biological alteration? Would it merely halt decay, or would it warp the very essence of being? The history of alchemy was replete with cautionary tales of ambition overriding prudence, of seekers consumed by the very forces they sought to command. Her solitude, once a sanctuary for focused work, now felt like a prison of her own making, amplifying the internal debate. She yearned for counsel, for a perspective untainted by her own fervent desires. But who in the world could truly comprehend the magnitude of her discovery? The established scientific community would dismiss her as the crackpot, her findings as the ramblings of a deluded recluse. The common folk would either fear her as a sorceress or worship her as a deity. Neither reaction offered the reasoned discourse she desperately needed. The opalescent substance sat on her workbench, a silent, radiant enigma. It represented the culmination of her life's work, the answer to her most fervent prayers, and simultaneously the most terrifying question she had ever faced. To use it was to step into the unknown, to potentially rewrite the fundamental laws of existence. To destroy it was to relinquish a power beyond measure, to condemn herself to the same finite existence she had so ardently sought to transcend. The weight of this decision, this existential quandary, pressed down upon her heavier than any lead she had ever attempted to transmute. The storm outside had subsided, replaced by an unsettling calm mirroring the tense stillness within the tower as Elora contemplated the profound and irreversible choice that lay before her. The fate of her own being and perhaps the very definition of life hung in the balance. So ये था आज का हमारा पैसेज. सो इलारा के बारे में था. सो किस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट करती थी, है ना. सो उसी के स्टोरी के बारे में. तो उनमें कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है. तो इनमें जैसे कि ये जो थे, ये काफ़ी मतलब लिटरेचर भरे हुए थे इसमें, ठीक है. काफ़ी टफ वर्ड्स यूज़ किए गए थे जो कि ज़्यादातर समझ में नहीं आएंगे आपको. सो आपको मेनली कुछ नहीं करना है इसमें. ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादातर आपको वो क्या नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है. बस आपको टोन समझना है, पॉजिटिव बात हो रहा है, नेगेटिव बात हो रहा है, ठीक है. सबसे पहला चीज़. दूसरा चीज़, आपको उसमें जो भी वर्ड जो हाईलाइटेड वर्ड है उसको समझने की कोशिश करना है बस. जैसे कि क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है. तो पहला क्वेश्चन है ऑपोजिट ऑफ क्विक्सोटिक. तो क्विक्सोटिक जैसे देखा था हम लोगों ने, तो क्विक्सोटिक मतलब क्या होता है. जैसे कि शिमेरिकल हो गया, विम्सिकल हो गया, फैंसी हो गया, ना. तो ये सब हो गया. क्विक्सोटिक मीन्स
लेकिन इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मतलब एक्जॉटिक मतलब थोड़ा ख्यालों में ज़्यादा रहने वाला, या फिल्मी दुनिया में इस समय ज़्यादा रहने वाला। तो और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल, सिंपल सी बात है। यानी कि पहला का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ द प्रेटरनेचुरल। तो प्रेटरनेचुरल मीन्स क्या होता है, कॉमन, ऑर्डिनरी, सुपरनेचुरल, स्टैंडर्ड, मंडेन। कॉमन मीन्स वही चीज़ हुआ, ऑर्डिनरी मीन्स भी वही चीज़ हुआ, स्टैंडर्ड मीन्स भी वही चीज़ हुआ, मंडेन मीन्स क्या होता है, बोरिंग। तो ये सब चीज़ तो न्यूट्रल चीज़ है, ठीक है, जो कि सामान मतलब रेगुलर बेसिस में कोई अलग चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ को दिखाने के लिए कहा जा रहा है प्रेटरनेचुरल, जो कि यहाँ पर सिर्फ सुपर नेचुरल से ही इसका एक फीलिंग आ रहा है, वाइब आ रहा है कि हाँ भाई यही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ को बता सकता है कि हाँ सुपर नेचुरल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। सो दैट्स इट गाइस, ये थे आज के हमारे आरसी का क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं गाइस तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।